So today we are going to see next topic, that is page navigation. So first I will explain what is page navigation, and then we need to figure out what is the difference between page navigation and the drill through. Okay, so it is an one of the important question for the interviews. So I will start. I will pick one visualization on page 1 and going to apply some values. I pick sales territory, and from the sell table I consider profit. Now just I want to go back and want some inputs from your side. What is the purpose of drill through? Right. So there is a word that is called as navigation. So in drill through, by default, when you are using that, it will navigate you to the another page to show you the detail plus filter. Means if you are selecting southwest and applying a drill through on that one, it will show you complete information of southwest on the another page. But in case of navigation, the things are different. Here it will only navigate you to a particular page. Okay, so I just want to ask one question to you. Here I have profit on the basis of sales territories. 3, 9 sales territories are with me. Okay, and on this page I want to see only the details about southwest. Okay, and I want to achieve this one without drill through. So can I achieve this? I will repeat my question. Here I have 9 sales territories and I want to go to this page and want to see the detailed information about the southwest only. I will make the information first. It will clear your idea. I will take a table to fill some information there. Profit, quantity, tax amount, tax rate. So I have some information here. I just want to increase the size of values so we can see it properly. I think now it is visible. So my question is what? Here I am having the detailed information for the sales territories. Okay, and I want only the information of southwest here. So during that, when I'm analyzing this particular visualization and I want to go to next page and only want to see the southwest data, मुझे इस पेज से उस पेज पे जाना भी है, यहाँ पे सिर्फ साउथ वेस्ट का डेटा भी देखना है, लेकिन मुझे ड्रिल थ्रू यूज नहीं करना है. मेरा क्वेश्चन समझ में आ रहा है आपको? ये इजीली हम अचीव कर सकते हैं. जैसे मैं अभी यहाँ पे करके भी दिखाता हूँ आपको. यहाँ मैं अभी ड्रिल थ्रू लगाता हूँ, सेल्स टेरिटरी पिक करता हूँ, यहाँ पे कुछ नहीं कर रहा हूँ मैं. यहाँ पे I will keep it as it is. I will go back here, right click, drill through is applicable. You can go to page 2 and you can see the southwest data. By using this back button you can go back.
So this is simply achieved by using drill through. But can we achieve this one by some other method? So I will let you know how you can do it. We'll take another page, put information. Let's see. So for doing this particular exercise, we have to use page navigation. How to use page navigation? Will explain you. So go to the first page, take one button. So from where you can insert a button here, go to insert option, go to the buttons. Here different buttons are available with us. If you select blank button, then you can write anything there. So I select blank. After selecting that one, just expand it as per your requirement. Then when this button is selected, the format button option is eligible for you. If you click somewhere else, that format button option will not be present there. So it will activate only when you are selecting the button. Do one thing, go to the button text, activate it, go down, right, southwest. This is the first step. And first step is what? We have to create a button. You can increase the text size like this. So now button is created, and what we have to do, when we click this button, we should get navigate to page 2. Okay, so what I will do, I will select this button again and going to give some action. इसको जब मैं action दूंगा कि आप यहाँ से वहाँ जाओ, तभी जाके वो जाएगा. So for that purpose, in the format button itself, I have to go down, turn on the action, hit the drop down button, go to the type, make it page navigation. Then apply here page 2, means where, see here destination is written. So you are activated page navigation and you want to go to that destination, select the destination. That's it. Now click somewhere else, control southwest. Now it is navigated here, but did you achieve that particular part that you want? No. So in that case, what we have to do, we have to use a filter here on the basis of, we can use both the case. We go for going to apply visual level filter. So on the basis of visual level we can apply. So here you can see sales territory, and activate south west here. Okay, again go back to page 1,
click southwest. Can you see southwest data? Right. So राइट, मतलब आपको पेज नेविगेशन में सब कुछ मैनुअल करना पड़ता है बेसिकली। पे द पर्पज ऑफ पेज नेविगेशन इज व्हाट, फॉर एग्जांपल यू आर वर्किंग ऑन this particular page. Okay, just keep some buttons here. If I keep a button of southwest here, I will click that one. It will go to the southwest page and it will show you the information for southwest. Okay, if you place a button here for mid east, in detail of mid east here, it will give information of mid east here which you have to create like this. So यहाँ पे आपको filter manually करना पड़ रहा है। सो पेज नेविगेशन का काम है सिर्फ आपको इस पेज से उस पेज पे लेके जाना। हमने इतना जो प्रोसेस किया था इसको आप सिंपली किससे अचीव कर पा रहे थे? ड्रिल थ्रू से अचीव कर पा रहे थे, राइट। बट पेज नेविगेशन से आपको बहुत सी एक्सरसाइज करनी पड़ती है। सो कभी कभी ऐसा होता है कि ड्रिल थ्रू का यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती, आपको सिर्फ पेज नेविगेट करके देना पड़ता है। लाइक यहाँ पे पेज 1 2 3 4 करके आप डाल दीजिए। यहाँ क्लिक करने से अच्छा है वो यहाँ पे भी क्लिक कर सकता है। 1 2 मतलब यहाँ पे पेज के जो भी आपके नाम लिखे हुए हैं वो सारे आप यहाँ पे डाल दीजिए इन बटन्स। पेज 1, पेज 2, पेज 3, पेज 4, पेज 5। फिल्टर लगाने का जरूरत नहीं है। इंफॉर्मेशन क्या है पेज में वो आप डायरेक्टली शो कर सकते हो उसको यहाँ से, कि पेज 1 में अगर आपका इंफॉर्मेशन तो ठीक है, पेज 1 तो नहीं चाहिए, पेज 2 में कुछ और इंफॉर्मेशन, जस्ट क्लिक फॉर पेज 2, आपको डायरेक्टली लेके जाएगा। सो पेज नेविगेशन का यूज आप वहां पे कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर आपको फिल्टर करके वैल्यूज चाहिए देन इट इज रिकमेंडेड गो फॉर ड्रिल थ्रू ऑप्शन। ठीक है, अभी मुझे अगर मैं यहाँ पे जैसे ये यूज कर रहा हूँ साउथ वेस्ट, क्लिक कर रहा हूँ, मैं यहाँ जा रहा हूँ, मुझे वापस उस पेज पे जाना है तो मैं कैसे जाऊंगा? आई डोंट वांट टू गो लाइक दिस। क्या कर सकते हैं? पूजा, right, we have to add one more button. Consider that one as an back. Increase the size, select the button, format button option is activated, go to the action. Now this time again we have to select page navigation. After selecting page navigation we have to choose destination, and this time destination will be page 1. So here you can go back like this. ठीक है, अभी मैं इसका आपको पहले पर्पस समझा के बताता हूँ, बाद में अपन डिफरेंस पे डिस्कशन करेंगे। जैसे कि मैंने आपको कहा था पे मैंने पेज 2 3 4 5 6 यहाँ डाल दिए मैंने, उनमें फॉर एग्जांपल यहाँ पे प्रॉफिट लॉस टैक्स टैक्स अमाउंट ऐसी डिटेल्स आपने रखी है। तो ये पेजेस के नाम मैंने लिख के रखा है पे, सिंपल क्लिक करूंगा वहाँ पे पहुंच जाऊंगा मैं। वहां जाने के बाद मुझे लगता है कि फर्स्ट पेज पे जाना है तो मैं इस तरीके से एक बैक बटन बनाऊंगा जिससे मैं फर्स्ट पेज पे वापस जा सकता हूँ। ठीक है, तो ये है पेज नेविगेशन का यूज कि आप एक जगह से दूसरी जगह पे जा सकते हो। लेकिन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ड्रिल थ्रू एंड पेज नेविगेशन दैट वी हैव सीन फ्रॉम प्रीवियस क्लास टू दिस क्लास? क्या डिफरेंस दिखा आपको? राइट, फिल्टर डेटा मिलता है वो भी दूसरे पेज पे नेविगेट करके। ठीक है, अगर हम पेज नेविगेशन पे आते हैं तो हम एक पेज से दूसरे पेज पे जा सकते हैं लेकिन हमको फिल्टर डेटा नहीं मिलता है।
अगर चाहिए तो आपको उसको मैन्युअली फिल्टर करना पड़ेगा। सो दिस इज द मेन डिफरेंस। मैंने ये सब आपको जो एक्सरसाइज करके दिखाई है कि मैं जब साउथ वेस्ट पे क्लिक कर रहा था तो मैं यहाँ पे आ रहा था, लेकिन आते समय मुझे कुछ फिल्टर करके मिला क्या? नहीं। मैंने क्या किया, खुद से फिल्टर लगाया उसके ऊपर में। ये दूसरी बात, पेज नेविगेशन जब हम अप्लाई करते हैं तो हमको बैक बटन ऑटोमेटिकली मिलती है क्या? नहीं। लेकिन आप जब ड्रिल थ्रू लगाते हैं तो आपको पेज बैक बटन मिलता है ऑटोमेटिकली, राइट? सो अभी आप यहाँ पे, ये मेरा एक्सप्लेनेशन हो चुका है, इसमें कोई डाउट है क्या आपको? नहीं। तो आप मुझे अभी क्या करके दिखाएंगे, यहीं पे एक ही रिपोर्ट में मुझे पेज नेविगेशन का फंक्शनैलिटी भी दिखाइए आप, और ड्रिल थ्रू का भी फंक्शनैलिटी दिखाइए। तभी जाके आपको ये दोनों का बीच का डिफरेंस क्लियर हो जाएगा एंड यू विल बी एबल टू गिव आंसर इन द इंटरव्यूज। मतलब कंपैरेटिवली आप मुझे इसी रिपोर्ट में करके दिखाइए। यू कैन सिलेक्ट 1 2 3 पेजेस ऑन दैट वन। आप मुझे पेज नेविगेशन दिखाओ पहले, उसके बाद में ड्रिल थ्रू करके दिखाओ। मेरा क्वेश्चन समझ में आया? ओके।